नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी ओपन कॉन्वर्सेशन को आप भी ओपन माइंड से सुनिएगा। मे बी आप भी किसी बात से रिलेट कर पाएँ या फिर हमारा कोई एक्सपीरियंस आपकी हेल्प कर सके। तो शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी ये पूछ के कि इस हफ्ते ऐसा क्या करा या फिर इस हफ्ते कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे प्योर खुशी, प्योर ब्लिस मिले? Well, there were a lot of things, but one such incident was when I had installed the AC in the room because it was so hot during the week, and that sleep was so good in the air condition. I mean, I get it, ye maya hai, but life is it was also about luxuries, yeah. You cannot deny that it gives you so much peace of mind and calm, and you just enjoy being present over there. So yeah, that was one thing that really made me happy. And here's what's right about it. uh I understand the value of that, and I acknowledge it, and I'm thankful about it. I'm not stupid about it. बात तो सही कही। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि डू यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि हम कहाँ पर हैं? क्योंकि एसी लगाना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग। तो डू यू वांट टू टेल? Sure. Well, we live in Canada, and हम लंदन ओंटारियो में रहते हैं. And in Canada, air conditioner installation is actually very easy and quick. uh, Most of the house designs जिसमें windows होते हैं, they have a bracket in which a standard industrial AC that you get in Walmart or Canadian Tire, they have similar brackets that can be fit into it, locked right away, so it doesn't take a lot of effort. So it could be done by anyone. It's easy to install. So isliye I was able to do it in a single day. वेल इसके लिए तो आई एग्री। यहाँ के विंडो फैंस भी जो आते हैं वो इतने आसान है कि एनीवन कैन फिट इट, एनीवन कैन, क्या बोलते हैं उसको लगाने को, Install. इंस्टॉल इट। No worries. मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू वन कंट्री जिसमें सारा खर्चा पेड है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एट ऑल, तो कौन सी कंट्री में जाओगे और क्यों? Well, honestly, I do not have a great answer about it. uh, to name a place that would sound, very nice, I would like to go to UK, London. The real London. The reason is because very simple. uh, I did my bachelor's there, and I've seen how the hype is. I get it nowadays. Within UK, there are a lot of facade about different propagandas and so. But originally, the place is, and it still is, very beautiful. And at the same time, the vibe over there is so awesome. It's always very happening. तो उस माहौल में रहना for a person where it's always happening. Like, you don't need people around you. You can just get down to high streets are what are known as, called as downtowns over there. You go to high streets and there's someone playing music, there's a farmer's market live, and there's so much things happening. So it's basically a place where you won't get bored. You'll always remain curious, seeing things and interested, and you will meld with a lot of people there. That's why I love the place. तो ग्रेजुएशन यूके लंदन से करी और उसके बाद अभी रह रहे हो कनाडा के लंदन में। तो और कौन सी कंट्री के लंदन में तुम्हें और जाना है या जाना होगा? लेट्स सी। Uttarakhand.
No, but genuinely, I also studied in Uttarakhand before I went to UK. I studied in the UK in India, and I the thing I liked about that place was uh, it was not crowded with like loads of people. Still, at that time, they had enough crowd. But the silence and the loneliness and the nature, you get more closer to nature. So it was very calming to live in Uttarakhand. वहाँ पहाड़ियों का कल्चर उनका खाना, the people are lovely there. There is a certain type of tradition and innocence they have got going there, and it's very naturally fit, you know. तभी उसको देवभूमि भी बोलते हैं. So it's very nice place, and I feel if anybody wants to lead a life, a peaceful life, we should look at people at such places and see how appreciative they are. They're so appreciative of mountains over there, of nature. They pray their gods, and everyone is so associated with nature that they look after it. So that's why it's a wonderful place. मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ियों पे एक अलग ही तरीके की वाइब इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं नेचर से। अगर हम लोग भी नेचर से कनेक्ट हों, नेचर की रिस्पेक्ट करें, एक्सप्लॉइट करने की बजाय, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी जगह लाइक सिर्फ पहाड़ियाँ ही देवभूमि नहीं, पूरी लैंड देवभूमि है। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ अ देवभूमि, राइट? See, all these things, ये discussion में it sounds very wise, but the true reality of the world is different. There's a reason why people over there are like that. Reality में I feel everybody is very practical when it comes to real things, and we as human beings, हम लोग में प्रॉब्लम है, हम सेल्फिश हैं एक्चुअली में. वी आर सो स्टबर्न. But what mountain does is, what is the reason you start appreciating it? It is because you cannot win over a mountain. Okay, you cannot cut a mountain away and make path for yourself. So you see the nature around you, and no matter how much you fight, it shows that your stubbornness is nothing. So people start respecting that place and always seeking blessing of the place, so that everything goes well for them. तो जहाँ पे भी हम देखते हैं कि देर इज समथिंग दैट इज ग्रेटर देन आर ऑरा, आर बीइंग, something so majestic, we start respecting it and doing that. Unfortunately, that is how we humans behave about anything, even if it's a person amongst us, or if it's a entity among us or anything. It needs to first put down our stubbornness, and then we get we get the thought to actually look at things the other way. एकदम सही कहा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ क्योंकि इस पे अगर मैं भी बोलना शुरू करी तो मुझे बहुत लंबा खींच दूंगे। हमने बहुत गंदा एक्सप्लॉइट कर रखा है अर्थ को। बट लेट्स गो टू अगला क्वेश्चन। अपनी लाइफ का कौन सा टाइम यू वांट टू रिलीव द मोस्ट? एक आइडिया मेरे को है क्योंकि यू टॉक अ लॉट अबाउट योर ग्रेजुएशन यूके की, तो आई वुड अज्यूम कि यू वुड वांट टू रिलीव द मोमेंट्स इन द व्हेन यू वर इन यूके। Not yes and no, to be honest. If you say that, my first thought comes about reliving is the memories of जब हम लोग वेकेशन पे जाते थे, and we had to board a flight always because we lived in Oman, Muscat. So that experience of flying at least 2 times in a year during your school vacations to go back to India, visit your family, and come back, it used to be like exploration, right? Like you're going on a trip. So that was something that was so fascinating, that I saw just the thought of you traveling somewhere, meeting some places, and every time trying to discover more about India. And like I used to have a checklist that we need to travel in train
because I love buying all the comic books and magazines that you get in the railway station. वहां पे मेरी पर्ची निकलती थी किताबों की मैं भर भर के लेता था. और दूसरी चीज, वो the other thing was the snacks you get in राजधानी, right? In fact normal sleeper में भी जो वो खाना देते हैं, it's very nostalgia. And then you go on to another city where food, language and everything used to be so different that it was it was a constant dopamine effect in your brain, like how you people watch reels nowadays. Why do they like watching reels so fast? It's because there's so much different things they get to see right away. We for us that used to be a vacation time, because we used to travel in all different kind of modes. कभी कभी कोई फार्म हाउस विजिट करते थे, कभी कोई रिलीजियस प्लेस जाते थे, कभी वी यूज्ड टू गो टू वाइल्ड प्लेसेस एज अ फैमिली लाइक बैंकॉक एंड प्लेसेस. वहाँ पे हमारे कुछ मेरे नाना के brother की whole family settled in Bangkok, go and visit them. So it used to be so fun. I feel every family must plan to go out at least once a year and visit some place and have that fun. That whole process, of planning the itinerary, flight tickets, and our parents used to involve us in everything. See, अभी तो मैं बहुत ज्यादा lazy हूँ because I know how easy the work is and how easy it is to get it done. So that stubbornness is there, I agree. But he used to leave it on us to decide, and he used to ask us questions. क्या है, क्या itinerary है? So it used to be a good process. So I feel that is something that I would love to relive, because you get to do so many things, and you get to be individual. I was accountable for holding my passport, my boarding pass. I was accountable to make sure I'm not taking out my own phone in railway stations and everything. So it did teach me how to react with the world when you're outside and deal with it. At the same time, I understood how kindness works, how you're supposed to be polite to people. If something is wrong, let it go. Don't try and prove the other person and yell at them. होता है कहीं पे सर्विसेज अच्छी नहीं होती, कहीं पे वो नहीं होती. But if you're just good to them and maybe someday you revisit the same place, they're so smiling and welcoming, like they know you're such a nice lad, and they're always so good. So I feel you learn a lot. You should do it. ट्रेन जर्नीज का तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता था कि खाना घर से पैक करके सुबह सुबह मम्मी पूड़ियाँ और वो सूखी आलू की सब्जी बना लेती थी, और पूरे रास्ते ट्रेन में चाय 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 चाय. एक अमेजिंग ही जर्नी थी वो टाइम भी ना, ट्रेन में ट्रैवल करना इट्स डिफरेंट. True, and I'll tell you one thing. No matter, I'll tell you some few things. They are very nostalgic. 90s kids who ever have traveled in trains and still do. राजधानी में जो सूप सर्व होता था with those long thick biscuits, slim biscuits to dip in soup, and साथ में अमूल का butter and black pepper. So that combination used to be so bloody good that उसका कुछ alternative अच्छा है ही नहीं, literally. And the other thing used to be you would wake up early morning in train, and वो सुबह सुबह वो आलू की पैटीज, ब्रेड, बटर, वो नाश्ता, वेरी सिंपल बट इट यूज टू टेस्ट सो गुड. साथ में एक छोटा सा केचप का पैकेट. सो दीज थिंग्स आर वेरी नॉस्टैल्जिक. द फ्रूट केक, लाइक यू सेड, द चायस, कुछ जगहों पे कचौड़ियाँ, कहीं पे पकोड़े. ब्लडी हेल, माई वी यूज्ड टू गो फ्रॉम कानपुर टू गोरखपुर, तो मेरी मामी पूड़ी, आलू की भुजिया, वो एक यूपी स्टाइल बनता है, आम का अचार एंड मिर्चे का अचार. मिर्चे का अचार is made out of those dried red chilies with filling inside them, and this it's so goddamn tasty. So we used to eat that, and my mama, so it'd be like, अच्छा ये तो तुम लोग का रात का सुबह का खाना है. स्टेशन पे वो, क्योंकि we used to know winters होता था, ट्रेन्स डिले होते थे, तो स्टेशन पे bloody hell that fucker used to bring बिरयानी पैक करा के, और हम लोग सिर्फ वेट कर रहे ट्रेन का, और थम्स अप वो बिरयानी खा रहे पेल के, और फिर कॉमिक्स खरीद रहे हैं, और उसके बाद आइसक्रीम खा रहे हैं. बोला खाना पच गया,
फिर उसके बाद ट्रेन और 2 घंटे लेट हुई तो मामा पूछते थे फ्रेश होना, चलो घर हो, फ्रेश हो लो फिर आते दोबारा से। तो हम लोग वापस से घर गए, फ्रेश हुए, फिर वहां से निकले, फिर कुछ खाया पिया, फिर आए। तो मामा भी यूज्ड टू बी लाइक कि जब तक ये लोग चले नहीं जाते, जो मौका मिले करो। ही यूज्ड टू बी लाइक अ बडी। सो दैट काइंड, where do you get to do that, right? And parents को भी पता है, बोल के कोई फायदा है नहीं। So we used to enjoy all these things a lot. ट्रेन में कभी इतनी लेट हो गई कि वापस आ गए 2 दिन बाद फिर जा रहे हैं। और 2 दिन बाद जा रहे तो मामा कहते थे गाड़ी हम बुक कर लेते, सब चलते, चलो तो गाड़ी बुक करके जा रहे फिर। तो all these things used to be fun. Like always there used to be a problem, but उसका ऑल्टरनेटिव, वी यूज्ड टू हैव सो मच फन बिकॉज अब तो पता है, अब तो गया तो कुछ कर नहीं सकता है। सो यू शुड नॉट बी फजी, लेट इट गो रॉन्ग, यू विल सी, यू स्टिल ट्राई टू हैव फन, यू विल हैव फन। सही है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन व्हिच यू आर स्टिल ट्राइंग टू आंसर इन लाइफ? See, there are a few actually, especially with a character like me. But one thing I know now, which is I'm still trying to answer, is I've become so materialistic and bit fake that it's difficult for me to be my authentic self all the time. So, and I see the pleasure and I see the effortlessness in not trying to do something that I'm not, just being my authentic self. And it is so easy for any of us to become pretentious. So now I feel ki for me that is something that I want to be like, and I try to be like. And so it is difficult, but that is one question that yes, I'm trying to still answer and learn every day more. What is your authentic self? See, again, I said it's there are a few questions, and this is a deep question. My authentic self is just me being okay to express that yes, I don't like this and this is not me. And the reason I don't like it is the reason why I don't know shit about it. It's not that I'm stupid. I'm just not thinking about it, and I'm so easily zoned out of it. I'm one of those person of if who is if not into something will completely zone out of it. So I don't want to pretend amongst people because that's the trend and that's how smart people sound. So I'm happy being myself. I have to be stand up for myself a lot of times, which is the most difficult thing I think. तो मतलब यू नो भेड़ भेड़ की चाल नहीं चल रहे हो, लाइक यू आर नॉट फॉलोइंग? I cannot. With me, this has been the problem since start. कि प्रॉब्लम इसलिए लोग सुन के कहेंगे अच्छा है, बट ये प्रॉब्लम इसलिए कि मैं बचपन से भेड़ चाल चल ही नहीं पाया हूँ। Just for even in fact, just for the sake of not doing the same thing, I've turned and did something complete opposite. और मेरे घर वाले भी कभी गुस्सा करते थे इस पे कि तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, ऐसे कौन करता है यार, थिंक लॉजिकली। and I've just enjoyed being like that. So I'm one of those guys. Like I need to do something that I think is right. And usually क्या होता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मैं जो करता हूँ, it turns out to be the most difficult part for anybody else to do, or in even me. And most of the times I just do it, sometimes partially, sometimes completely. It's normal. वेल, अपने घर की क्रांतिकारी तो मैं भी थी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप है। तुम्हें क्या लगता है कि हम सपने देखते हैं भागने के लिए या उनको समझने के लिए? I'm sorry. तुम्हें पता है दुनिया में कोई आदमी ऐसे बैठ के नहीं सोचेगा कि भाई साहब हम सपने क्यों देखते हैं कि ऐसे भाग उसको तो लाइक ही गाइस डोंट गिव अ फक अबाउट ड्रीम्स।
unless it's about some girl or chick that he's having fun with or flirting with. Other than that, भले कैसा भी सपना हो, बॉयज आर सो ऑप्टिमिस्टिक, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है आया था ओके, तो फिर। ये सवाल तो मैं सुनने वालों से भी पूछना चाहूंगी, जितने भी हमारे मेल लिसनर्स हैं, अगर कोई होते भी है तो फर्स्ट टाइम, पहली बात तो ये है, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक डू यू इवन थिंक अबाउट द ड्रीम्स और नॉट? एनीवे, तो यू डोंट थिंक अबाउट ड्रीम्स एट ऑल? नो सी, अगेन वियर्ड ड्रीम्स सबको आते हैं, and most of the times I wake up and I think, "Oh, that was fucking weird." हाँ था, okay, then I move on. Like it has never bothered me because I knew that it is a lot of things that we still don't understand. Brain is so complex, we still don't understand. We try to decipher it, but we still cannot. So if so many people cannot, I don't know why and what. I'm more in present than I'm trying to think what has happened and what is not. The guys are like that. Like they're so easily distracted with shit. You cannot believe how easily guys get distracted because our mind is so curious. We keep jumping. नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है तुम्हें हंसी आएगी बट तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी का टाइटल क्या होगा? Oh, I don't want my autobiography or biography. Like I've never thought about it. क्या नाम होगा? I don't know. How to keep failing at everything 100 times, infinity times. Like I'm just kidding. See, I feel nowadays everybody easily shows up what they've done is such great. But honestly, I've not had such difficult scenarios to establish myself and grow. My parents loved me a lot. They looked after me a lot. They've beaten the shit out of me, and at the same time, they have paid because I've beaten the shit out of few things. So they had to pay a lot. So a lot of this. So my parents have been there and they have made me become a better person. Although I was a very violent guy, but they made me a calmer person. So I don't think that I've done anything of that great value that it should be shared with people. I think there are people in everyday life who are grown into situations and then they go on to help their whole family out. And there's not just one person. हर एक इंडिया के मिडिल क्लास के घर में एक वैसा लड़का होता है जो निकलता है, एंड दैट इज सो एम्पावरिंग. तो आई फील देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी स्टोरीज आती भी नहीं है बाहर. सो आई थिंक वी शुड, द फैमिली शुड recognize that person and thank him that hey, you did the work, you went ahead. क्योंकि if you, for people like me जिनके लिए सब कुछ प्रेजेंट था, if I had used those things मैं आज 10 times आगे रहता. But I'm enjoying, I'm being the proper human being. I'm just being, and I'm just trying to take, I have the opportunity to take the risk and I'm doing that. इस पे तो आई एग्री विद यू, एंड शाउट आउट टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने मेहनत करी, जिनकी मेहनत की वजह से जो हम लोग आए, हम लोगों को इतनी मेहनत नहीं उनकी करनी मेहनत पड़ी। नहीं नहीं, बोलो बोलो। नहीं, मैं कहने वाला था उनकी मेहनत नहीं, उनके मजे की वजह से. बट सॉरी, आई शुड नॉट से दैट. नहीं, उनकी मेहनत ही थी। आई I मीन mean, जितना जितना मेरे पेरेंट्स ने करा है, जितनी नॉलेज उनको है, उसकी आधी भी आई वुड नॉट से कि मेरे में है, बट मैं भी मेहनत कर रही हूँ कि मैं जितना अच्छे से गाइड मेरे पेरेंट्स ने मुझे करा, उतने ही अच्छे से गाइड मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर एवरीवन स्टॉप्ड, एवरीथिंग स्टॉप्ड, ओके, शांत हो गए हैं सब, 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में, सब सिर्फ तुम्हें ही सुन रहे हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में से कौन सा ऐसा लाइक मोटिवेशनल बात तुम बोलोगे कि लाइक समथिंग दैट चेंज्ड योर लाइफ एंड दे इट वुड चेंज द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू एज वेल? यार
रेगुलर लोगों की तरह सवाल क्यों नहीं हो सकते? ओ माय गॉड, इतना तो, ऐसा तो मैंने कभी कुछ करा भी नहीं होगा जितना डीप क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो. ठीक है, आई ट्राई टू आंसर टू माय फुलेस्ट नॉलेज. हाँ, एक चीज जो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, दैट हैज अफेक्टेड द पीपल अराउंड मी, इज मी ओनली. ये क्या बात हुई? हाँ, I'm being very honest because, like I said, I've always done things that I've not done it for the reason that, hey, because it should sound like this that I've done. I've genuinely, and this is me being my authentic self, I've genuinely done things because I felt why not. And the chances of those, all those things being successful, and I'm still doing something. Like, even we are at a point in our life, whether it is we it's very difficult, but we still aim for targets that are so high and we still run for them. So for me it's never in between. So मेरे experiences mostly यही है कि आई ट्राई एंड लर्न फ्रॉम अराउंड मी. मैं पहले जो चीजें करता था जिस वे में, फिर बीच में आई लॉस्ट देम एंड आई बिकॉज आई गॉट I came to college, I saw the people, then I saw the people are judgmental about things, and I just left that creative side of my mind and everything. But now I'm back to it, and I feel, don't stop what you like doing, just keep doing it on the side, just for the sake of you like doing it, you just do it. तो मैं उसलिए करता हूँ, और मैं जैसे करता हूँ वो उसमें मोस्टली यही आते कि आई फेस 1,000 प्रॉब्लम्स, बट here's the fun thing, most of the times, out of the 1,000 problems, I'm first able to solve 10 problems, and with the hope of being able to solve those 10 problems, I am trying and solving everything else. And sometimes it takes longer time, sometimes it's done halfway, sometimes not, but I'm getting better at trying to solve everything. एंड इसमें ये भी लर्निंग होता है कि कभी कभी आपको समझ में आता है कि ये चीज तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता. तो स्टॉप पुटिंग योर टाइम एंड एफर्ट ऑन दैट. So just cut things. If you're genuinely interested in something, you have to be obsessed about it. Life is about hard work, smart work. People say everything, but there is no cut to being practical. आप बाहर जाओगे जॉब में, people are good to you, but they'll try to oversmart you. आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, the realtor will try to oversmart you. So that is how the world functions on. So you need to be practical and realistic, and you just need to not do bad for the people, but don't get yourself in bad places. Take time to validate things on your own, and if you're so interested in it, learn it. You the learning will come from when you face all those problems again and again, and then you get better at it. So mera wo hai, I have not still done it, but I'm happy and I'm content with where and what I am. And I see that for me to grab onto something that is so big, I have still not put in that much of work, very simply put. तो यू सेड ना वन थिंग कि करते करते यू गेट टू नो कि कोई एक चीज़ तुम नहीं कर सकते हो, राइट? इसका एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से दे सकती हूँ नहीं कि चाहिए. नहीं कि Go ahead. 2 प्लांट लेके आई थी, इंडोर प्लांट, एक चल रहा है, एक मर गया, फिर एक और प्लांट ले आई खरीद के, फिर वो मर गया प्लांट, फिर एक और प्लांट ले आई खरीद के, पर अभी भी ये ना प्लांट लगाना छोड़ा नहीं है, इवन दो यहाँ कनाडा में बहुत एक्सपेंसिव आते हैं इंडोर प्लांट्स. तो आई एम जस्ट नॉट गिविंग अप कि आई कैन डू इट तब तक जब तक मेरे सारे प्लांट एक साथ मर नहीं जाते. अगर सब चले जाएंगे तो फिर आई विल गिव अप कि हाँ भाई अब नहीं. ऑनेस्टली एक्सपेंसिव आते हैं, प्लस कनाडा में घर छोटे होते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस दिस थिंग टेक, मेरा कार्ड पीछे गिर गया था, मुझे डब्बा साइड करके लेट के नागिन बन के कार्ड हाथ अंदर डाल के निकालना पड़ा था. ठीक है,
So it's, yeah, it takes lots more effort. तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता नेचर के साथ में, नेचर को अपने आसपास लाइक बढ़ते फलते फूलते देखना अभी तक? अगर आप लोग हैं तो पूरी कॉन्वर्सेशन सुन के रियलाइज हो चुका होगा ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे सबसे पहले फ्रेंड है। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। ऑलमोस्ट क्या, वी आर एट द एंड ओनली। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने सोचा था कि व्हाट्स वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मी। तो इट completely depends on you if you want to ask that or not. Well, thank you, firstly. Secondly, नहीं, मेरे को कोई सवाल नहीं पूछना है, आई एम गुड। मैं आई एम नॉट गोना साउंड लाइक पीपल। जी बड़ा अच्छा लगा आके, धन्यवाद, मैं आपको शुभकामनाएं दे, नहीं, ब्लडी हेल, मैं चाय बनाने जा रहा था अभी, मेरे को भूख लगी है। तो नो, बट थैंक यू, and I hope you all enjoyed. So we'll talk then some other time now. Okay, thank you so Cheers to much. everyone. जय श्री राम। हर हर महादेव। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और हमारी जर्नी से थोड़ा भी रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछा जाए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक को भी चेक करें। अगर आपको क्रोशे के हैंडमेड चार्म्स, टॉयज़ या लड्डू गोपाल के विंटर ड्रेसेस पसंद हैं तो आपको वो पेज ज़रूर पसंद आएगा। मैंने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए विंटर ड्रेसेस यहीं से ही ऑर्डर करी थी। मिलते हैं अगले सैटरडे को एक नए कॉन्वर्सेशन के साथ। जय श्री राम।